हेलो एवरीवन, वेलकम टू CHSE कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज लाइव क्लास को समस्त को स्वागत। प्लेयर मो वॉइस क्लियर आछि कि? हेलो एवरीवन, वेलकम टू CHSE मो वॉइस क्लियर आछि कि पिला माने? वेरी गुड इवनिंग। स्टार्ट करिबा? प्लान स्टार्ट करिबा। डिफरेंशिएट क्वेश्चन पढ़ी पारे सेमति किछि मेंशन करनी तेनु कहियोनी, तेनु तुम प्रैक्टिस करो। पास मार्क पई टिप्स और ठीक अछि परिशेष रे कहि देबी। देखो आज रो लाइव क्लास रे हम कोन नेछु 10टा लॉ नेछु, बुझियला 10टा लॉ जोटा हमर स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पढुछि, जेमति स्टेट एंड एक्सप्लेन ओम्स लॉ बा स्टेट एंड एक्सप्लेन कुलम्स लॉ, सेई टाइप रे हमें 10टी लॉ नेछु। कोन नेछु 10टी लॉ नेछु। तेनु फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट अछि व्हाट इज कुलम्स लॉ। व्हाट इज कुलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखो कोन कहूछि कुलम्स लॉ। It states that the electrostatic force between two stationary point charge is तले कौन कहले, it states that the electrostatic force between two stationary point charge is कौन गोटे होची directly proportional, गोटे होची inversely proportional। directly proportional to the product of magnitude of two charges। कहा को directly proportional, product of magnitude of two charges। कहा को inversely proportional, to the square of the distance between them। कौन to the square of the distance between them। तले कौन कहला, it states that the electrostatic force between two point charges by two stationary point charge is directly proportional to the product of magnitude of two charge और inversely proportional to the square of the distance between them। धर मल्टीपली दीटा पॉइंट चार्ज नेली q1 and q2 आ तांका भीतर जो सेपरेशन डिस्टेंस ताकू नेली r। let two point charges q1 and q2 and they are separated by a small distance r, then the force of attraction or repulsion between them is कौन। फर्स्ट इक्वेशन हमर कोन देले a proportional to q1 into q2। काहे कि कारण हम फर्स्ट कोन बोलले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। कोन देतला प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस। तेनु लिखले कोन f proportional to q1 into q2। सेंती सेकंड कंडीशन कोन थिला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस रे हम कोन नेचे r नेचे और डिस्टेंस रो स्क्वायर माने r स्क्वायर, इनवर्सली माने 1 बाय रहइबो, तले f proportional to 1 by r square। बुझिला कि f proportional to गोटे हला q1 q2 आउट होची f proportional to 1 by r square। तले दीटा इक्वेशन हम कोन पाइबा f proportional to q1 into q2 divided by r square। हमें प्रोपोर्शनल चिन्ह उठा पे गोटे कांस्टेंट ऐड करू जोटा होची बीटा। कोन f equal to बीटा q1 q2 by r square। कोन बीटा q1 q2 by r square। ताहले SI यूनिट रे कोन हबो f equal to 1 by 4 pi epsilon 0 q1 q2 by r square। CGS रे कोन हबो
1 by k q1 q2 by r square vacuum रे k टा 1 हे जो ताले 1 by 1 equal to केते से 1 को सेतरे गुणले कोन हो q1 q2 by r square से q1 by q2 into r square हेबो divided by r square बुझियला तो ताले कोन कहला Coulomb's law of electrostatic कोन कहूची the electrostatic force between two stationary point charge is directly proportional to the product of the magnitude of the charges inversely proportional to the square of the distance between them ताले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कोन प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कोन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम दीटा पॉइंट चार्ज नेले q1 एंड q2 तंगा सेपरेशन को नेले r ताले फर्स्ट कंडीशन अनुसार f प्रोपोर्शनल टू q1 q2 सेकंड कंडीशन अनुसार f प्रोपोर्शनल टू 1 by r square दीटा को कंबाइन करले हम पहले कोन f प्रोपोर्शनल टू q1 by q2 by r square प्रोपोर्शनल टू उठे गोटे कांस्टेंट आड हैला बीटा q1 q2 by r square बुझियला ये थिला हमरो Coulomb's law of electrostatic तापर आसला Gauss law जोटा 2 मार्क के क्वेश्चन आसे Gauss law कोन it states that for any distribution of charges कोन for any distribution of charges the total electric flux कोन for any distribution of charges the total electric flux linked with the closed surface is equal to कोन equal to the 1 by epsilon 0 times of the total charge within the surface ताले कोन कहला Gauss law कोन कहूची for any distribution of charges कोन for any distribution of charges the total electric flux कोन the total electric flux linked हेतिबो का सहित with a closed surface linked with a closed surface ताले कोन कहला for any distribution of charges the total electric flux linked with the closed surface is equal to का सहित equal 1 by epsilon 0 times of the total charge within the surface कोन 1 by epsilon 0 times of the total charge within the surface mathematically it is denoted by कोन phi equal to कोन होबो 1 by epsilon 0 into q कारण total charge केते 1 by epsilon 0 times बुझियोस 1 by epsilon 0 times into total charge ताल कोन कहला for any distribution of charges the total electric flux linked with the closed surface कोन the total electric flux linked with the closed surface is equal to कोन is equal to the 1 by epsilon 0 times of the total charge within the surface ताले फर्स्ट हमर गला कोन Coulomb's law सेकंड आसिला Gauss law बुझियला तापर नेक्स्ट क्वेश्चन की जिबा आज 10 टी लॉ प्रैक्टिस करबा बुझियला पिला ने 10 टा लॉ प्रैक्टिस करले जेमितेले परीक्षा सेतरु क्वेश्चन आसीबो देखो नेक्स्ट आसिला Ohm's law वेरी वेरी इंपोर्टेंट Ohm's law कोन कहै Ohm's law भलसे बुझिया चेष्टा करो इट स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेंपरेचर कांस्टेंट थिबा बेले the current flowing through the conductor kana at constant temperature the current flowing through the conductor of uniform area cross section jahar kona uniform area cross section thibo tale kon कहला at constant temperature the current flowing through the conductor jo current ta flow hoji conductor madhya re of uniform area cross section is directly proportional to the kona potential difference across the two ends of the conductor directly proportional to kona takara potential difference across the two ends of the conductor ताले कोन कहला मन रखो समझते at constant temperature constant थिया बेले the current flowing through a conductor जो current of conductor भीतर flow हुए of uniform area of cross section जार कोन uniform area of cross section is directly proportional to कोन potential difference across the two ends of the conductor कोन potential difference across the two ends of the conductor mathematically current directly proportional कोन potential करंट को हम केन डिनोट करछ आई भाबरे पोटेंशियल को केमिति v भाबरे तला i प्रोपोर्शनल टू v एटी प्रोपोर्शनलिटी उठिया पई गोटे कांस्टेंट ऐड कराला कोन 1 by r तले i equal to 1 by r into v बस सिंपली v equal to ir फार्मूला टा मन रखियो v equal to ir ओम्स ला फार्मूला कोन बारंबार कहूची v equal to ir तले कोन कहला द at constant temperature the current flowing through the conductor जहार of uniform area cross section जहार कोन थाए uniform area cross section is directly proportional to kono potential difference across the two ends of the conductor kono potential difference across the two ends of the conductor तन ग्राफ टा देखो केमति छि स्ट्रेट लाइन i proportional to v कारण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बुझो कि नहीं तापर असला लिमिटेशंस मु सेइत्रा ऐड कर देछि लिमिटेशंस टा देखो लिमिटेशंस कोन देछि Ohm's law is not applied Ohm's law applied होएनी कोडी when the temperature of the conductor is not constant जदी temperature of the conductor constant रहेनी ताले Ohm's law कोडी अप्लाइड करा होएनी जोठी temperature of the conductor is not constant तापरे Ohm's law is not obeyed Ohm's law obey करनी केतले if the area of cross section of the conductor is variable जदी तार area of cross section ता constant न होई कि variable हबो ताले सेटा obey करबनी Ohm's law कोन करबनी obey करबनी कोतले
जेतले एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कंडक्टर वेरिएबल हबो बुझिलाटी जदी कोन देची ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड केतले ओबे करबनी इफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इज वेरिएबल जदी कांस्टेंट हैला ताले ओबे करबो जदी कांस्टेंट नुहे ताले ओबे करबो नाही तापर आसला ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड ओम्स लॉ ओबे करबनी केतले इन केस ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर केतले इन केस ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर लाइक पेन जंक्शन डायोड हबो जेनर डायोड हबो ट्रांजिस्टर हबो बुझिलाटी विभिन्न प्रकार नॉन ओहमिक कंडक्टर कोन कहे नॉन ओहमिक कंडक्टर ताले ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड कोडी इन केस ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर कोन ओम्स लॉ इज नॉट ओबेड इन केस ऑफ नॉन ओहमिक कंडक्टर लाइक पीएन जंक्शन डायोड जेनर डायोड ट्रांजिस्टर एटसेट्रा ताले बुझिला ताले ओम्स लॉ कोन जानिला at constant temperature constant हे बेले the current flowing through a conductor जो current conductor रे flow हुए जहार of uniform area cross section जहार कोन थाए uniform area cross section थाए is directly proportional काउ directly proportional to the potential difference across the two ends of the conductor directly proportional to the कोन potential difference across the two ends of the conductor mathematically I proportional to v constant note जो सॉरी proportionality चिन्ह उठा पे गोटे constant आन करले 1 by r simply v equal to ir ता ग्राफ टाइट कराई जाईची तब लिमिटेशन तार तीनटा को मन रखिबो बुझिला तापर आसला लेंजेस लॉ कोन इट सेड दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ कोन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट कहार ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कोन इट सेड दैट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑपोजिट कहार ऑपोजिट to the direction of change in magnetic flux बुझिला मैथमेटिकल तो कैन डिनोट करबा E equal to minus d phi by dt कोन E equal to minus d phi by dt ताले इट ओबेस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेंजेस लॉ कोन ओबे करे लेंजेस लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बुझिला तापर आसला फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कोन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो Faraday's first law kono whenever there is a change in magnetic flux kono whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil कहा से तो linked with a coil and EMF is induced across it kono and EMF is induced across it राधे राधे को न्यूमेरिकल करिवे हां न्यूमेरिकल करिवे जो डेट अनुसार हमें जहां जेमते हमें सिस्टम करचे पाठ पढिया पई हमर फिजिक्स रो शेड्यूल बनाइछे से अनुसार हमें क्लास करिवे आज हमर कोन क्लास थला आज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन थला मुसे 10टा इंपोर्टेंट स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन नेछि लॉज वाला बुझला तो जेमितले क्वेश्चन आसीओ परीक्षा रे तुम जानि परिबो एग्जाम हॉल ले आ पिला माने वोकेशनल पिलांगर तो क्वेश्चन देखथिबो तांकर जो वाला क्वेश्चन आसी तमर भी से वाला क्वेश्चन आसीओ केते जण भाबु छथि जे वोकेशनल पिलांगर जो क्वेश्चन आसी जायछि हमर से क्वेश्चन आसीबोनी तनु सेटा तमर भूल धारणा तांको संगे तमर कोनोसी लिंक नाही बुझि पाइलो तांको से तमर किछि लिंक नाही तांकर जोटा क्वेश्चन अछि आरो वर्ष भी तांकर बोर्ड सर्टिफिकेट मॉडल लॉ क्वेश्चन पड़थला तमर ए बोर्ड सर्टिफिकेट मॉडल लॉ क्वेश्चन पड़थला तेनु तम तांको कोर्स तम कोर्स समान नुहे किछिटा एपट सेपट अछि बुझिला किछिटा अलग अछि तांकर कोर्स संगे तमरो तेनु तांकर जहा पडिछि तमे ताको प्रैक्टिस करो बहुत बढ़िया क्वेश्चन देछि से क्वेश्चन भी किछि क्वेश्चन आसीबो तेनु से क्वेश्चन को भल से प्रैक्टिस करो हैला तला फैराडेस फर्स्ट लॉ कोन whenever there is a change in magnetic flux linked with a coil कहा से तो लिंक थबो linked with a coil and EMF is induced across it EMF कोन हो is induced across it the induced EMF केतल पर्यंत एक्जिस्ट करिवो so long as magnetic flux linked with the coil changes continuously केतल पर्यंत एक्जिस्ट करिवो जे पर्यंत magnetic flux linked with the coil जो magnetic flux ता कहा से तो लिंक हेतबो coil changes continuously change न हेछि बुझिला ये थिला फैराडेस फर्स्ट लॉ तापर आसिला फैराडेस सेकंड लॉ देखो पिला माने फैराडेस सेकंड लॉ कोन कहूची इट सेड दैट the magnitude of induced EMF कोन the magnitude of induced EMF is directly proportional to the time rate of change of magnetic flux linked with the coil कोन कहला it says that the magnitude of induced EMF kono the magnitude of induced EMF is directly proportional to the time कहां से तो directly proportional to the time rate of change of magnetic flux linked with the coil ये हला हमर कोन फैराडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस तला में कोन पढ़ले फर्स्ट पढ़ले कूलम्ब्स लॉ तापर पढ़ले गॉस लॉ तापर पढ़ले ओम्स लॉ तापर पढ़ले लेंजेस लॉ तापर पढ़ले फैराडेस लॉ तापर नेक्स्ट क्वेश्चन आसला ब्रियोस्टर्स लॉ very important question भल से पिला माने बुझियो चेष्टा करो ब्रियोस्टर्स लॉ कोन ब्रियोस्टर्स लॉ आछि वेव ऑप्टिक्स रो कोड आछि वेव ऑप्टिक्स रो आछि
देखो इट इज ए रिलेशनशिप ये कहार सहित रिलेशनशिप ऑफ ए लाइट वेव कौन इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ ए लाइट वेव एट द मैक्सिमम polarization angle of light कौन it is the relationship of light wave at the maximum polarization angle of light बुझेला तापरे this law is named कहा द्वारा नेम्ड हेची आफ्टर सर डेविड ब्रियोस्टर कौन आफ्टर सर डेविड ब्रियोस्टर इन 1811 माने 1811 मसिया रे ब्रियोस्टर को नाम अनुसार कोन हेची ब्रियोस्टर्स लॉ बाहर तर मुख्य पॉइंट पे पॉइंट हम आसीने मुख्य पॉइंट कौन this law states that कौन the tangent of the polarization angle कौन the tangent of the polarization angle is equal to the refractive index of the medium very important question कौन the tangent of the polarization angle कौन the tangent of the polarization angle is equal to the refractive index of the medium कौन is equal to the refractive index of the medium देखो डायग्राम टा भल से बुझे चेष्टा करो फर्स्ट आसला इंसिडेंट रे सॉरी मैथमेटिकली ये कौन म्यू इक्वल टू tan ib केते जना को tan ip भी लिखंती बुझला तो म्यू टा होची कोन एठी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ib टा होची पोलराइजिंग एंगल कोन म्यू टा एठी कोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ib टा होची पोलराइजिंग एंगल देखो कहला गोटे इंसिडेंट लाइट पड़ला कहार अनपोलराइज्ड इंसिडेंट लाइट पड़ला जोटा होची अनपोलराइज्ड गोटे इंसिडेंट रे पड़ला जोटा होची अनपोलराइज्ड से कौन हेगला रिफ्लेक्टेड हेगला कौन हेगला रिफ्लेक्टेड हेगला देखो एटी रिफ्लेक्टेड हेजी माने सेटा होची पोलराइज्ड रिफ्लेक्टेड रे माने पोलराइज्ड तले कोन कहला गोटे इंसिडेंट रे आसला जोटा होची अनपोलराइज्ड सेटा रिफ्लेक्टेड हेगला जोटा होची कोन पोलराइज्ड तापरे रिफ्रैक्टेड हेजी स्लाइटली कहैची रिफ्लेक्टेड हेजी बुझि बेलटी गोटे रिफ्लेक्टेड आ गोटे रिफ्रैक्टेड फर्स्ट इंसिडेंट रे आसिला रिफ्लेक्टेड हैला बुझि बेलटी रिफ्लेक्टेड हैला ब्रियोस्टर्स लॉ सुनी ना ब्रियोस्टर्स लॉ वेव ऑप्टिक्स रो इंपोर्टेंट क्वेश्चन सबुट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची ब्रियोस्टर्स लॉ देखो फर्स्ट आसला इंसिडेंट रे से कोन हैला रिफ्लेक्ट हैला कोन हेला रिफ्लेक्टेड हैला जेतला इंसिडेंट रे एटा आस्तला सेटा थिला अनपोलराइज्ड जेतले कोन हैला रिफ्लेक्टेड हैला सेटा हैला कोन पोलराइज्ड तापरे रिफ्रैक्टेड जोटा होची सेटा को कहजे स्लाइटली पोलराइज्ड कोन स्लाइटली पोलराइज्ड बुझेला कोन स्लाइटली पोलराइज्ड ताले इंसिडेंट एटा आसिला अनपोलराइज्ड लाइट तापरे रिफ्लेक्टेड हे गेला सेटा हैला पोलराइज्ड आ रिफ्रैक्टेड जो हैला सेटा हैला स्लाइटली पोलराइज्ड तापरे आसिला बायोट-सावर्ट्स लॉ कोन बायोट-सावर्ट्स लॉ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हां सिलेबस रे अछि सिलेबस रे काई कटिबो सिलेबस रे अछि देखो बायोट-सावर्ट्स लॉ कोन it is an equation describing कौन describe करची the magnetic field generated by a constant electric current कौन it is an equation describing कौन describe करची magnetic field generated by a constant electric current बुझला तापर कौन it relates ये कौन रिलेट करे it relates very good evening कौन कहला it relates the magnetic field to the magnetic magnitude sorry it relates the magnetic field to the magnitude direction and length of the electric current कौन कहला it कहा को रिलेट करे it relates the magnetic field को कहा सहित रिलेट करे to the magnitude direction and length of the electric current देखो dB proportional to I dB proportional to dl dB proportional to sin theta dB proportional to 1 by r square चारटा को हमें कंबाइन कर देले कौन हबो I dl sin theta by r square ताले dB proportional to कौन हबो I dl sin theta by r square कौन हला देखो मु लिखि छै देखो from this equation we have dB proportional to I dl sin theta by r square बड़े proportional ड्यूटी गोटे कांस्टेंट ऐड करली k कोन हां एग्जाम रे आसीबो एटा बायोट-सावर्ट्स लॉ जेमिति आसीबो dB equal to k I dl sin theta by r square कोन k I dl sin theta by r square then asila Kirchhoff's law of electrical network very important question Kirchhoff's करो दीटा लॉ अछि Kirchhoff's current law Kirchhoff's voltage law बुझला कोन फर्स्ट लॉ रे से कहथिले Kirchhoff's current law सेकंड जोटा देथिले सेटा होछि Kirchhoff's voltage law बुझला KCL KVL पोटेशियम क्लोराइड भाबिबनी एटा हला Kirchhoff's current law पोटेशियम क्लोराइड बारंबार कोछि भाबिबनी पिला माने हला तब देखि कोन कहला ताले Kirchhoff's current law it states that the algebraic sum of current kono the algebraic sum of current meeting at a junction kono the algebraic sum of current meeting at a junction in an electrical circuit is always zero kono in an electrical circuit is always zero tale kon कहला the algebraic sum of current
meeting at a junction in an electrical circuit is always zero. कौन algebraic sum of current meeting at a junction in an electrical circuit is always zero. ताले कौन कहला mathematically summation of I equal to zero. कौन summation of I equal to zero. बुझेला तो माने I in equal to I out माने जोटा एंटर करिवो सेटाला इन जोटा बाहर को आसीबो सेटाला कोन आउट जो जने धर जने एंट्री करछि जने एग्जिस्ट करछि बुझि होछ ना नै जोटा एंट्री कला सेटा इन जोटा बाहर को आसला सेटाला एग्जिस्ट होला सेटाला आउट बुझिला ताले आ गोटे मन रखिबो इंपोर्टेंट पॉइंट इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज परीक्षा रे कंपलसरी ऑब्जेक्टिव आसीबो पिला माने देखिबो जतले ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू क्वेश्चन आइतबो फैराडे जो सॉरी कोन किर्चॉफ फर्स्ट लॉ बा सेकंड लॉ रु जेमिति गोटे ऑब्जेक्टिव आइतबो किर्चॉफ फर्स्ट लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डैश बुझिला तो फर्स्ट लॉ बा करंट लॉ डायरेक्ट एमती भी लिखि पारे बुझिला तो तेनु भलो से मन रखिबो किर्चॉफ्स करंट लॉ ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कोन किर्चॉफ्स करंट लॉ होची कोन ओबे द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ होची लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समस्त को वेलकम मो भगवान नो तुम माने प्रैक्टिस करो जो माने प्रैक्टिस करबे से माने डेफिनेटली रिजल्ट कर परियो बुझि बेले तनो प्रैक्टिस कैपेसिटी ऊपर तमरो डिपेंड करे मो मात्र नाम मात्र तुम खाली तमरो जहा असुविधा समय रे सहायता दरकार मो द्वारा जति के हे परिबो मु तुम बड़ भाई हिसाब रे सेति की तुम सहयोग जोगै परिबी बुझि बेले किंतु तुम ऊपर डिपेंड करे तमे केते मात्रा प्रैक्टिस करछो तमे प्रैक्टिस करो बहुत बढ़िया मार्क रखिबो हाँ निश्चय पास मार्क पाई कौन टिप्स मु कहि दे व्यस्त होनी और ठीक अछि देखिबा कोन तले किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ वाला किर्चॉफ्स करंट लॉ कोन द अलजेब्रिक सम ऑफ करेंट मीटिंग एट ए जंक्शन इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज ऑलवेज जीरो बुझिला मैथमेटिकली कोन समेशन ऑफ आई एटा कोन पढ़ा जाय समेशन ऑफ आई इक्वल टू 0 by I in equal to I out माने एंट्री करिवो आउट करिवो बाहर को आसीबो ताले इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज देन आसला किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बुझला किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ बा किर्चॉफ्स सेकंड लॉ पिला माने काली मु नोट दे पर नथली आज दीटा कर नोट एबे जस्ट क्लास सल्ला परे मु संगे संगे अपलोड कर देबी बुझला प्रैक्टिस सीरीज 1 रो प्रैक्टिस सीरीज 2 रो काली सब रीजनिंग क्वेश्चन डिस्कशन करबा देखो किर्चॉफ्स सेकंड लॉ कोन कहूची इट सेड दैट इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कोन क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रे the sum of EMF in a closed electrical network the sum of EMF is equal to कहा से इक्वल माने कोन कहला it says that in a closed electrical network गोटे closed electrical network the sum of EMF कहा से समान the sum of EMF is equal to the sum of their product of current and resistance flowing through them माने कोन कहला इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल नेटवर्क रे कोन द सम ऑफ EMF एटा हला सम ऑफ EMF हां रीजनिंग एटा तो स्टेट एंड एक्सप्लेन क्वेश्चन आज डिस्कशन होची रीजनिंग क्वेश्चन काली प्रोवाइड कर देबी देखो ताले कोन कहला सम ऑफ EMF इक्वल टू समेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोन करंट एंड रेजिस्टेंस आई हला करंट आर हला कोन रेजिस्टेंस तले करंट इनटू रेजिस्टेंस इफ देयर इज नो EMF इन द सर्किट जदी कोन देयर इज नो EMF इन द सर्किट रे नाही तले देन समेशन ऑफ IR इक्वल टू केते 0 हो जो कोन समेशन ऑफ IR इक्वल टू 0 इट ओबेज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वेरी इंपोर्टेंट बारंबार कहूची लेंजेस लॉ ओबे करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किर्चॉफ सेकंड लॉ ओबे करे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बुझिला तापर असला जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पिला माने आ गोटे क्वेश्चन रही जाई मु ताको नोट करनी एम्पियर सर्किटल लॉ मु सेटा लिखि कि तुमको पठै देबी बुझिला ए टेलीग्राम रे अपलोड कर देबी मु गोटे लिखि पइलेन रही जाइतला हैला मु सेटा को अपलोड कर देबी कोन कहला इट्स सेड दैट द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप हुए केंदी कोडी डेवलप हुए इन ए कंडक्टर द अमाउंट ऑफ हीट डेवलप्ड इन ए कंडक्टर due to constant current flowing through it is directly proportional to the square of the electric current देखो H proportional to I square काना heat produced होची
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर माने कोन देला स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आ गोटे कोन देला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर माने H प्रोपोर्शनल टू R आ गोटे कोन देला हां लाइव क्लास बा होची देखो तापर होची डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर व्हिच द करंट फ्लोज ता माने कोन गोटे ला H प्रोपोर्शनल टू टाइम माने कोन एट लिखिनी सॉरी H प्रोपोर्शनल टू एठी होबा T ताले टोटल हम जदी कंबाइन कर दबा H प्रोपोर्शनल टू फर्स्ट रहला I स्क्वायर तापर रहला H प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस तापर H प्रोपोर्शनल टू T फर्स्ट ला कोन करंट तापर स्क्वायर ऑफ द करंट तापर रहला रेजिस्टेंस तापर रहला टाइम ताले टोटल हम जदी कंबाइन कर दबा तीनटा इक्वेशन को H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर आर T ताले मु प्रोपोर्शनलिटी चिन्ह टाइप एठी मो लिखिनी स्टेप H प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर T प्रोपोर्शनल टू टाइप मु कांस्टेंट डाउन कली 1/j ताले कोन होबो H इक्वल टू I स्क्वायर आर T डिवाइडेड बाय J कोन H इक्वल टू I स्क्वायर आर T लाइव मीट हो ठीक अछि खूब शीघ्र करबा लाइव मीट करबा हला H इक्वल टू I स्क्वायर आर T डिवाइडेड बाय J ताले वेयर J कोन जूल्स कांस्टेंट जार वैल्यू होची 4.2 जूल पर कैलोरी एटा CAL कैलोरी बुझिला तो ताले कोन कहला H proportional to I square H proportional to R H proportional to T ताले टोटल हम जदी कंबाइन कर दबा H proportional to I square R T आ proportional to टाइप में गोटे कांस्टेंट ऐड करली 1/j ताले कहला H proportional to I square H equal to I square R T divided by J तापर आसिला हमर लास्ट क्वेश्चन कोन क्यूरीज लॉ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्यूरीज लॉ पिला माने क्यूरीज लॉ विषय जानि छ की पिला माने क्यूरीज लॉ विषय के जानि छ की एटा होची मैग्नेटिज्म चैप्टर बुझिला तो मैग्नेटिज्म रो क्यूरीज लॉ टा एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा को वर्ष पढिनी किंतु समिति पढि बोलिया भी माने न पढि बोलिया भी किछि माने नै कारण स्टेट एंड एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन अछि तनु ए क्वेश्चन टा भी मु मेंशन कर दै छी बुझिला देखो Curie's law कोन Curie's law states that the magnetization of paramagnetic material कोन the magnetization of paramagnetic material is directly proportional to the applied magnetic field कोन कहला it says that the magnetization of paramagnetic material कोन magnetization of paramagnetic material is directly proportional to कोन applied magnetic field कोन applied magnetic field तापर the magnetization decrease as the temperature increase माने टेम्परेचर बढ़ेले मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करे कोन टेम्परेचर बढ़ेले कोन करिवो मैग्नेटाइजेशन डिक्रीज करिवो द फार्मूला ऑफ द क्यूरीज लॉ इज कोन m इक्वल टू c इनटू b बाय t कोन m इक्वल टू c इनटू b बाय t m ता होची मैग्नेटाइजेशन b हैला मैग्नेटिक फील्ड इन टेस्ला t हैला टेम्परेचर इन केल्विन c हैला क्यूरीज कांस्टेंट कोन क्यूरीज कांस्टेंट एत तारा ग्राफ टा कर जाई ताले हमें सब कौन लॉ पढ़ले आरंभ रु शेष पर्यंत फास्ट पढ़ले कुलम्ब्स लॉ तापर पढ़ले गॉस लॉ तापर पढ़ले ओम्स लॉ तापर पढ़ले लेंजेस लॉ तापर फैराडेस लॉ तापर बायोट-सावर्ट लॉ किर्चॉफ्स लॉ तापर जूल हीटिंग लॉ ब्रूस्टर्स लॉ तापर क्यूरीज लॉ बुझिला थी तेनु एई सब क्वेश्चन को भलो से प्रैक्टिस करो जत्ते मात्रा परछ सेते प्रैक्टिस करो कारण पढ़ी दे पळैले कोनोस जिंस होएनी प्रैक्टिस बहुत मात्रा दरकार तेणु बहुत मात्रा प्रैक्टिस करो बढ़िया रिजल्ट हबो फिजिक्स तुम भाबुतो नुवा पैटर्न करछि डर लागुछि किछि कर परिबुनी सब कर परिबो त माने जदी प्रैक्टिस ठीक रखिबो ताले सब जिंस कर परिबो हो ठीक अछि पिला माने कार कोन डाउट अछि की पचरो 30-35 मार्क केमिति रखिबो सुनो टेलीग्राम चैनल लिंक नेम होछि CHSE कांसेप्ट क्लैरिटी सुनो केमिति 30 रु 35 रखिबो देखो लॉन्ग क्वेश्चन जेति की कुहाला लॉन्ग क्वेश्चन तीनटा को बल से प्रैक्टिस कर दबो तीनटा नो लॉन्ग क्वेश्चन पांचटी प्रैक्टिस करो जो माने टोटली पढि परनो जदी पढिवर असुविधा अछि सेमान तीनटा प्रैक्टिस करो नले एटलीस्ट पांचटी प्रैक्टिस करो बुझिला तो एक्स रेगुलर स्टूडेंट करो टिके दया बारू केही कोन हां एक्स रेगुलर प्लान सेम क्वेश्चन आसेबा तेणु सुना तमे लॉन्ग क्वेश्चन मु बारंबार आउथरे कहि दोची किर्चॉफ्स लॉ ह्यूस्टन ब्रिज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम फोटोइलेक्ट्रिक लॉ जो आइंस्टाइन इक्वेशन गॉस लॉ रो जो लॉन्ग स्टेट कंडक्टर से एप्लीकेशन टा
बायोस्टाबसलर करेंट कैरिंग सर्कुलर लूप एई पांचटी पिला माने भलसे प्रैक्टिस करो जेमिति ले एतरु दि तीनटा क्वेश्चन तमे पाइ जिवो आराम रे पाइ जिवो तेनु लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर हो गेले देखो लॉन्ग क्वेश्चन हमें 15 मार्क पाइ गेले तापर हमर होची स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पड़िबो चारटा 4 3 12 तमे तेनु जदि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भलसे प्रैक्टिस कर दबो ये पाइलो 12 15 12 केते 27 मार्क तापरे 2 मार्क रे सेंदी हमर पड़िबो जो क्वेश्चन सेत्र पड़िबो जे केतरा चारटा पड़ले तमे केते 2 2 चो 8 8 मार्क पाइ गेलो 27 8 35 80 पाइ गेलो आ डायरेक्ट प्रॉब्लम रो मु कहूची डायरेक्ट प्रॉब्लम पई तमे न्यूमेरिकल्स देखिबो जोटा डायरेक्ट प्रॉब्लम छोट छोट प्रॉब्लम कोतरा आसीबो एटॉमिक फिजिक्स जोटा सब अछि हमर लेमैन बाल्मर तादु एनर्जी जो तार पड़े शॉर्ट क्वेश्चन पड़े 2 मार्क रो बुझि बेलटे शॉर्ट नोट पड़े सेतुर प्रॉब्लम देखिबो क्रिटिकल एंगल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो प्रॉब्लम कंपलसरी आसीबो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रो 2 मार्क पई तापरे नेक्स्ट आउट होची कोन नेक्स्ट तमर प्रॉब्लम आछि ऑप्टिक्स रो जो कहली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्रिटिकल एंगल आ कैपेसिटेंस रो सीरीज पैरेलल एति की डायरेक्ट प्रॉब्लम पई देखो आराम रे बढ़िया मार्क आसीबो जय जगन्नाथ ना देखो फैराडे लॉ दि तीन मार्क पड़ले डायरेक्ट दुटा को लिखिबो पास मार्क पई देखो तमर प्रैक्टिकल मार्क तमे ऑलरेडी 30 पाई जाइछो 30 रु जहा जहार कॉलेज दिया दिबे हैला देखो तुम देखि पास मार्क पई हेले तुम तीनटा लॉन्ग क्वेश्चन आगे जदी भलसे क्लियर कर दबो ताले लॉन्ग क्वेश्चन पे तुम 15 मार्क मिल गेला लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क एपटे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन 12 मार्क 27 मार्क तेनो आराम रे हिजिवो तेनो दी दिन रे मु जेती क्वेश्चन प्रैक्टिस करलाई 10 10 20 टा क्वेश्चन ताकू भलसे प्रैक्टिस करो लॉन्ग क्वेश्चन प्रैक्टिस करो आ काली परदिन जहा प्रैक्टिस हो सेतु जेती प्रैक्टिस कर दो आराम रे पास मार्क होई जिवो नेक्स्ट आ कार बुझिया रछि कि कोन हाँ रीजनिंग क्वेश्चन काली प्रैक्टिस कराबा एते कम दोछन तुम कॉलेज रे 30 रे आ पिला माने कार कम बुझिबार अछि कि हाँ हाँ पीडीएफ आज सेंड कर देबे आउ टिके पर सेंड कर देबे हाँ एमसीक्यू भी डिस्कशन करबा हाँ एमसीक्यू डिस्कशन करबा आ कार कोन डाउट अछि कि न लाइव सेशन को एंड करबा इंपोर्टेंट क्वेश्चन कहलिबा हाँ टिके को कोन जाने चाहछो को हाँ एमसीक्यू सुनो एमसीक्यू डायरेक्ट प्रॉब्लम आसीबो बुझिबेलो एमसीक्यू रो डायरेक्ट क्वेश्चन आसीबो तमे एमसीक्यू बारंबार प्रैक्टिस करो सब चैप्टर रो जोरा सब डायरेक्ट बुझिबेलो जेमते हमरो लेमैन सीरीज रे अल्ट्रावायलेट लाइट बाल्मर सीरीज रे तमर कोन विजिबल लाइट पास चेन ब्रैकेट पिफोन रे होची हमरो कोन इन्फ्रारेड लाइट इनते सब डायरेक्ट क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक रो दीटा ना कोटा कोंतु गोटे हां इलेक्ट्रोस्टैटिक रो गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आ गोटे इलेक्ट्रोस्टैटिक ले तमे देखि दियो कोन कहलो हमरो जो कोनटा अछि हमरो एक्सियल इक्विटोरियल लाइन देखि दियो हां एति की लॉस हो प्रैक्टिस करो आदर्श एति की लॉस हो भाग प्रैक्टिस करो ए 10 टा लॉ रो जेमितले दि तीनटा परीक्षा रे आसीबो तने एत भलसे प्रैक्टिस करो काली एति क्वेश्चन जे प्रैक्टिस करो आसंदा काली हमें डिस्कशन करबा रीजनिंग क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैटिक रो सिलेक्शन लॉन्ग क्वेश्चन होजी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम आउट होजी हमरो एक्सियल लाइन हां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो माने प्रैक्टिस करदो से माने एमसीक्यू पाई जिवो देखो पोटेंशियल ना इलेक्ट्रिक फील्ड जे तो 5 मार्क करछि तने बेसी चांसेस पोटेंशियल लो पड़ार अछि बुझिला ठीक अछि क्लास को एंड करबा हाँ टेलीग्राम में एबे जस्ट मु आउ किछि समय परे अपलोड कर देबे ना ड्यूट वेलोसिटी सेते इंपोर्टेंट नहीं हाँ एमसीक्यू आनिबा श्रुति एमसीक्यू आनिबा
टेलीग्राम चैनल नेम होची से CHSE कांसेप्ट क्लैरिटी डिस्क्रिप्शन में लिंक अछि जाके टेलीग्राम रे जॉइन हो जाओ। ठीक अछि आज पे एतिकी थाउ समस्त लाइव क्लास जॉइन करथिबारु समस्त हृदय धन्यवाद। सो टुडे दिस मच थैंक यू हैव ए नाइस डे।